चैलेंज चटनी। चैलेंज क्या है? बाढ़ आई है और जान आफत में। डूबने का डर लगा रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बहते नदी नाले को बिना नाव के पार नहीं कर सकते। और नाव इस बाढ़ में कहाँ मिलेगी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद इस श्रृंखला के जरिए भारत के कई राज्यों के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को चुनौती देती है और देखना चाहती है कि ये छात्रगण अपनी रचनात्मक सूझबूझ से ऐसी परेशानियों का क्या तकनीकी हल निकाल सकते हैं। इसी नदी पार करने की समस्या रियल लाइफ चैलेंज को लेकर हमारी कॉलेज गेस्ट एंकर कर्नाटक के रामनगर जा रही हैं। वो फिर आंध्र प्रदेश पहुंचेंगी और वहां से फिर पुत्तूर, जिसे दक्षिण कन्नड़ भी कहते हैं। और 3 कॉलेजेस चुने जाएंगे जिन्हें ये चैलेंज दिया जाएगा। हेलो, मैं हूं नमिता वासुदेवन और मैं हाजिर हो गई हूं नए चैलेंज के साथ। NCSTC लेके आया है चैलेंज चटनी पहली बार इस कॉलेज में। मैं लेके आई हूँ चैलेंज चटनी पहली बार कुप्पम इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश में। हाय हाय। और हम लोग आ पहुंचे हैं विवेकानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। हाय 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 चैलेंज चटनी। जी हाँ, चैलेंज चटनी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है NCSTC। इसमें हम यहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ रियल लाइफ चैलेंजेस देंगे, यानी कि कुछ रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स, कुछ साधारण चैलेंजेस। और हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो आगे जाके बहुत बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, इन प्रॉब्लम्स को अपनी टेक्नो क्रिएटिविटी के साथ किस तरह से हल कर पाते हैं। और आपका आज का चैलेंज है ये। मान लीजिए कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बाढ़ आ गई है। हर जगह पानी से भरा हुआ है और पार जाने के लिए ना आपके पास कोई नाव है यानी कि बोट, ना ही कोई मदद, ना ही कोई सहारा। आपको अपने आप को और अपने परिवार को इस बाढ़ से बाहर निकालना है। वहाँ पर रहकर आप भूखा तो मरना नहीं चाहेंगे। आप फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसा टेक्निकल और वायबल सॉल्यूशन ढूंढ निकालिए जिससे कि आप अपने आप को उस बाढ़ से बचा भी सके, नदी को पार भी कर सके। और ये सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो क्या आपको ये चैलेंज कबूल है? चटनी मिक्स मतलब तकनीकी समाधानों की चटपटी प्लेट अलग अलग कॉलेजों के रसोई से। 2 चक्कर के We have created a personal flood wall. Sand is filled into the wall. The wall is covered with plastic covers and plastics are interlocked and linked with each other. ऑटोमेटिक फ्लड बैरियर्स। जब भी ये सिस्टम वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है तो हम अपने रोड्स में वाटर ट्यूब्स जो इंटरकनेक्ट हो गए अपने आप से, ताकि फ्लड के पानी जो भी आते हैं वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में चले जाए। We can connect 2 tires through the help of a bamboo or a rope, and it can create a small boat kind of a structure. Flexible tubes. That's one technical solution. The flexible tube means it is a special type of tube, and it can be used as a dam, and it can be filled. It can be used for transportation as well as it can be used for drinking purpose also. We can construct underground canals so that it has opening in the surface. It should have lids on the surface so that whenever there are floods, the lid should be open and the water should be drained inside the canals.
We will have a floating mechanism for the bicycles. एक नॉर्मल साइकिल हम यूज़ करते हैं, जो पीछे वाला टायर होता है उसका, उससे हम वुडन दो वुडन प्लैंक से अटैच करते हैं, और जो प्लैंक के नीचे लगाया है हमने खाली बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल, जिससे वो हल्की हो और पानी के ऊपर फ्लोट कर सके. We use wooden planks and water bottles to transport. The wooden planks, it is mainly the wood floats on water, and this design is flexible because based on the weight of the user and the number of users, we can increase the tank quantity and the number of tanks around the wooden plank. We define a mechanism in which with the cycle we have a mechanical blade system which cuts through the water. Because it has air inside. हल तो किसी तरह ढूंढा, लेकिन सवाल यह है कि किसका हल चलेगा और किसका नहीं. और हर टीम इस फिक्र में है, इस चिंता में है कि कहीं वो रेस से बाहर तो नहीं हो. Design is flexible, sir. Okay. Such life-saving boats they need. Flood transportation is Mr. Prajwal and team from 7th Electronics and Communication. And semi-finalist Anil Kumar and batch. The team comprising of Bhavya Dayanand, Chaitanya and We have accepted the challenge and we will do it. We have accepted your challenge and we will do it. Challenge accepted. हाय एंड वेलकम बैक. मैं हूं नमिता वासुदेवन और हम पहुंच गए हैं इस एपिसोड के फाइनल राउंड में. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी हैं आज के 3 टीम्स. तो आइए मिलते हैं हमारी टीम्स के साथ. टीम 1. Hello everybody, it's myself Chaitanya with my friends Aparna and Anusha Shetty representing Vivekananda College of Engineering and Technology, Puttur. Team 2. Respected judges and my dear friends, I am Rahul, Prajwal and Fazal here from Jain College of Engineering, Jain University, Bangalore. Team 3. Hi, this is Anil, this is Purushottam and this is Sivacharan from Kuppam Engineering College, Andhra Pradesh. Thank you teams. एक रियल लाइफ चैलेंज दी गई थी इन 3 टीम्स को और ये लेके आए हैं अपने साथ 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस. अब देखना ये है कि इनमें से किसका टेक्निकल सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है और इसका फैसला करेगी हमारी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जजेस. हमारे आज के जजेस हैं I am Dr. Ramachandra, Head of Technical Services, Ultratech Cement Limited, Bangalore. Mannar Udaya Ravi, Professor and Head Mechanical Engineering, Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore. Dr. C.B. Vijay Vittala, Professor, Mechanical Engineering Department, HMSIT, Tumkur. अब बिना किसी देर के देखते हैं कि हमारी पहली टीम ने इस समस्या का हल कैसे किया है. We came up with 2 situations. First one is when there is an unexpected flood, we can make use of raft made up of bamboo or banana trees, so that we can use it for mode of transportation. And the other case is when there is artificial floods which is occurring in the cities which are near river banks, etc. At that time, we have planned to construct an underground multi-purpose tunnel in which there are 3 layers. There are 2 layers are just for the movement of traffic, and the 3rd layer is only for the movement of water. Here we have shown a pipe. In this, the water drains out through another water reservoir over here. So what happens is when there are no floods, traffic is diverted. That is, it can move in the upper layer and also in the 2nd layer. So we can prevent traffic congestion. The whole transportation system won't be affected and we can carry out it easily. आइए चलते हैं टीम 2 के पास. टीम 2. So basically we have used the 3RQ policy, that is reduce, reuse and recycle policy. The reduce is nothing but we have minimized the resources available, the number of resources available. Here what we have taken is a wooden platform,
and the cans are easily available. If not these cans are available, you can go for 15 liters tin cans, or even in the rural sites you can go for milk cans that are airtight now and easily available. The prototype now made can sustain at least one person about 50 kgs. To increase the payload on the prototype, you have to include more number of containers, the airtight containers. As the volume of these containers as well as the area of the platform increases, the more payload can be applied. So the main advantages in this is the simpler design, less complexity, the minimum utilization of resources, easy availability of the resources in the rural areas. Even if you are being informed 1 hour prior to the flood, you can make this. अब आइए चलते हैं टीम 3 के पास और देखते हैं कि उन्होंने इस समस्या का क्या हल ढूंढ निकाला है। टीम 3, This is the construction of two normal boats arranged perpendicular to each other, which are joined with the help of hinges, and such that this arrangement makes us to fold the boat. Consider a situation in a slum area like this, then the people in those any two of the wings will be migrated to equally to the other two wings, such that the boat can be balanced and not tilted or drowned. And then using the mechanical pulley systems, these can be folded, and there will be, and the area of the boat will become narrower, and it can easily pass through them. And after passing through the lane, then it can be opened, and again a normal situation is regained, and the people can travel safely. And you may ask the doubt such that water come into it, but some waterproof material are arranged for each compartment such that water should not enter into it. There will be safety fans arranged at every compartment such that they can create an upward thrust which is equal to the mass, and therefore this type of boat is used for not destructing the accommodation capacity, but traveling safe and securely. Thank you. अब हम जाने वाले हैं जजेस के पास, जो इन तीनों टीम्स को उनके प्रोटोटाइप और उनके मॉडल्स के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों टीम्स के टेक्निकल सॉल्यूशन कितने वायबल हैं, कितने खरे और कितने खोटे हैं। तो चलिए चलते हैं जजेस के पास। What is new in this? The new thing is it's a multi-purpose. Even if there is no flood, we can use it to reduce the congestion of traffic. And another thing is we can make use of the water collected in reservoirs. We can transmit it to the areas where there is scarcity of water or to the other places. But don't you think this is a very costly solution that you are proposing? 3 layers, providing 3 layers. Of course, it's costlier. But the thing is, in cities like Bombay, Bangalore, and all other big cities, it is necessary, because otherwise, what happens is if it rains for 2 days continuously in cities like Bombay and all, it will be flooded, and the whole transportation system will be affected. On the cost of constructing the flyovers and all which we have, we can construct the tunnel, so the traffic will be moving on. So with that, if we can manage the flood, I think it is an advantage over there. No, when it floods, the whole thing gets flooded. Forget about the second stage. Even the first or the third, the whole thing gets submerged. How will it work? Sir, actually, here we have not shown the full model. Actually, within the main road, we are putting with the use of manholes, we are collecting the water through the big pipes, and we are collecting it in a reservoir. This is passed through whenever the water level increases, we are passing that to the bottom layer. When the level increases more, we are passing to the second layer. So whenever there is a indication that the water level is more or it's rained more, then we can manage it with the time so that there won't be chances of flooding whole area. Okay. Now, being students of engineering, Yes, sir. have you done any simple calculation? How much of weight can safely be taken? Sir, presently we have taken 6.25 square feet of the wooden planks, sir. 6.25 square feet of wooden planks and about 40 liters of the can, airtight can area. So we are getting around a possible maximum weight of 55 kgs right now, sir. Suppose you have 2 or 3 people and so much of weight also has to be kept on the board. What is the total volume required? Any calculation done on that? Sir, roughly, sir, like
As of now, we are using for 40 liters of can for one person. We can. What is the calculation? Do you have any particular calculation? So on no this? scientific calculation as such, sir, because we just want to use common sense and get the data, sir. It's not about engineering or anything, sir. It is a simple calculation. Yes, sir. Simple logic just involved in it. Simple logic can be when you face the situation suddenly during flood. Yes, sir. You can't calculate at that time. But now Sir, today you are given a situation. I think as an engineering student, you should come out with some calculation. And if you say it's only for 55 kg or 45 kg, and a 65 kg person cannot stand on it, and it's only for one person, don't you think there is a flaw in your system? Sir, that is like we have just made a prototype, sir. If we attach more to the same thing, if we attach one more can, sir, it will be able to sustain that 65 or 70 kgs also, sir. Okay, before moving on to 3, I just wanted to ask one question to team 1. You are telling about the manholes you want to open. Yes, sir. I feel basically in places like Bangalore, the flooding is because manholes are clogged. Yeah, of course, I agree with you, sir. But the thing is, if here to collect the water in this reservoir, we are using that manholes. We can make use of the purification techniques, and we can add more things to this. What we have proposed the model here, but the thing is again the cost. It will increase. So even if we take care of the water management, then I think we can easily have this. Okay, we will see. Team 3, you have given a folded mechanism. Do you really think it is feasible? Or is it only you want to show some innovation and something new that you have brought it? In a panic situation, people would like to simply get in and move, that's all. They will not think. And you want to say when there is a narrow channel, you want these two to be closed, and then there will be a platform, etc., etc. All those things, I think, for situations, it will not be feasible. You should always make it as simple as possible, not a complicated mechanism. Probably a normal boat, not with 4 of them. A normal boat going to the place 2 times would be better than taking this, then folding it, asking people to run this side, that side, then again mechanical using those hinges. And another thing is using these hinges can create problems. Hinge is always a weak link. It is a weak link in anything. Therefore, in such a situation when floods are there, your boat can as well be unstable because you have hinges on either side. We can put fans here and we can create upward thrust now, sir, such that we should balance overweight here. You are complicating the system. You are complicating the system. Instead, is it not better just to have a simple boat and let the boat go and transport and then come back again if there are more number of Sir, people? we want more number of capacity to be taken at a time. That is right. But with that, are you not making the whole thing unstable? This is an untested, Sir, if untested we plan one. neatly, then it will come. It is only a model. Yeah, just an idea, sir. But Have you seen in the literature or on the net anywhere this kind of a thing is used? No, sir. No, sir. Just considering Archimedes principle and Bernoulli's principles, and those principles we. Bernoulli's principle have used? No, sir, sorry. Archimedes principle. Okay. Archimedes principle, depending upon buoyancy and the area of contact. Basically, when such a situation is given to you, the solution has to be as simple as possible so that even in a panic situation, people will be able to make use of it. Okay? Sir, in case of a single boat, if a small lane will come, then the boat will be get stuck now, sir, at that place, and there will be no scope to get it through. And when this type of model will be there, then these two will be closed, and the area will be reduced, and it can easily know, sir. Now, suddenly you get the flood right now. What you do? Sir, okay. Suddenly you get the flood right now from the back. I already have a vehicle ready here, sir. I can float on it. Principle. What you are all going to do? I can make use of the plastic drums which are available in these places, and I can place a wooden plank over that, and I can construct a feasible structure easily. I think I can survive myself.
We will three accommodate in 3 compartments and we will make this table in this compartment and we will make stable and we will go. तीन टेक्निकल सॉल्यूशंस तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि जजेस इस बात का फैसला करें कि इन तीनों सॉल्यूशंस में से सबसे बेस्ट किसका सॉल्यूशन था, आप एक ऐसे इंसान से मिले जिसने न केवल इस समस्या को झेला है बल्कि इसे खुद ब खुद सुलझाया भी है। मिलते हैं गांव के एक ऐसे ज्ञानी से, एक ऐसे नव प्रवर्तक, एक ऐसे ग्रासरूट्स इनोवेटर से जिन्होंने काम ऐसा कर डाला है कि इंजीनियर्स हक्के बक्के रह गए। पूर्वी चंपारण बिहार के शहर मोतिहारी के मोहम्मद सईदुल्ला एक ऐसे ही अन्वेषक हैं जिनका घर बाढ़ में डूबा तो पानी पर चलने वाली अनोखी साइकिल बना डाली। इसका नयापन देखिए, इसके दोनों पहियों में 2 जोड़े हल्के आयताकार टिन के डब्बे यानी रेक्टेंगुलर एयर फ्लोट्स लगे हैं। जिनको मोड़कर अगर यूं उठा दिया जाए तो ये साइकिल सड़क पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनकी ये साइकिल गंगा नदी 1-2 बार नहीं दर्जनों बार पार कर चुकी है। वैसे तो पानी पर चलने वाली दुनिया में और भी साइकिल्स हैं, लेकिन महंगी इतनी कि चंपारण शायद कभी ना पहुंच पाए। इतनी सस्ती और बनाने में इतनी आसान ये साइकिल अपनी मिसाल आप है। पेडल चलाते हुए पिछले पहिए के स्पोक से जुड़े हुए पंखों के ये चौकोर फलकें यानी रेडियल ब्लेड्स जब घूमते हैं तब पानी को पीछे की तरफ ये धक्का देते हैं तो साइकिल पानी में आगे चलती है, और अगर पेडल उल्टा चलाया जाए तो साइकिल पीछे चलने लगती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने सईदुल्ला को 2005 में ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का नेशनल फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। समझा, यही तो बात है जो आज तक पायजामा और जमा निकाल कर खोल कर हम रोड पर नहीं दौड़े। समझे, यही सब मामला है। नहीं तो जितना हम बर्बाद किए वक्त और प्रॉपर्टी, आज हम लंगटे रोड पर नजर आते। मोहम्मद सईदुल्ला एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल के एशियन इनोवेशन अवार्ड में भी 12 सेमीफाइनलिस्ट्स में से एक है। और अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का, यानी कि उस वक्त का जब विनर को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन विनर तो वही होगा जिसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा, सबसे उम्दा और सबसे कारगर होगा। क्योंकि बहस तो कभी इस बात की थी ही नहीं कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है या छोटी, सस्ती है या महंगी। बहस तो सिर्फ इस बात की थी कि टेक्नोलॉजी आम आदमी के किसी काम आ सकती है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि हमारे जजेस के हिसाब से आज सबसे स्मार्ट और तेज टीम कौन सी थी। But in the given situation, we feel that the team 1 is declared as the winners. इस एपिसोड के NCSTC का बेस्ट टीम का अवार्ड जाता है विवेकानंदा कॉलेज को। Congratulations। और इस एपिसोड के रनर्स अप है कुपम इंजीनियरिंग कॉलेज। आपने यहाँ पे देखा एक चैलेंज और 4 सॉल्यूशंस। अगर आपको लगता है इसी समस्या के लिए अपना खुद का कोई हल ढूंढ निकाल सकते हैं तो 14 दिनों के अंदर अपने तकनीकी हल हमें जरूर लिख भेजें इन पतों पर। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ईमेल info@nifindia.org। इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव I3, ईमेल
bikram.lenka@cii.in. Intel email shweta.khurana@intel.com. Technopreneur Promotion Program TEP email pkdatta@nic.in. चैलेंज चटनी के अगले एपिसोड का चैलेंज है कि कैसे एक ऐसा फ्रिज बने जो बिना बिजली के भी खाने पीने की चीजों को ताज़ा रख सके। अगले हफ्ते इसी समय देखिए रोजमर्रा की समस्याओं के नए नए तकनीकी हल चैलेंज चटनी के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।